A very good morning, students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. Today, in our 19th lecture, we are going to discuss about change in quantity demanded and change in demand. That is the topic of chapter number 5, Theory of Demand. So, dear student, the very first topic, that is change in quantity demanded, and it is also known as movement along a demand curve. So, what is the change in quantity demanded? Let us discuss. Change in quantity demanded refers to change in quantity purchased of a commodity in response to change in its own price. So, dear students, when other factors remain constant and due to change in the price of the commodity, the demand of a commodity changes, that is known as change in quantity demanded. If we talk further about the change in quantity demanded or about the movement along demand curve, so there are two aspects of change in demand. The first one, that is the extension of demand, and the second one is contraction of demand. Let us discuss what is extension and contraction of demand. The very first topic, the subtopic, that is extension of demand. Other things being equal, that means all other factors. When quantity demanded increases due to fall in price of the commodity is known as extension of demand. So we can understand it in a very simple language that when the price of a particular commodity decreases and its quantity demanded increases, this is known as extension of demand. The same thing can be seen in the schedule as well. जो schedule given है वो देखिए बेटा. Initially the price was 5 and price decreased to 1. पहले के comparison में price decrease हो गई, 5 से 1 हो गई, and as a result the demand of the commodity increases from 1 to 5 और जो demand है वो क्या हो गई, increase हो गई. This is known as extension of demand. Description देखिए, जैसे ही commodity की price fall हुई, fall in the own price of the commodity, उसके बाद क्या हुआ बेटा, rise in the quantity demanded. Here all the other factors are constant. In the same way, we can see the diagrammatic presentation of the extension as well. Initially, when the price was 5 and the demand was 1, it is indicated as point A. And when price decreased to 1, the next demand is 5 and indicated by B. So, from A, we are moving to point B. क्या हो रहा है बेटा, डाउनवर्ड हो रहा है. कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड, ए से बी की तरफ. सो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. क्या होता है इसमें, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. So this is all about the extension of demand, that is when price of a commodity falls, its demand increases, that we have seen with the help of schedule and with the help of diagrammatic presentation as well. Now we are coming to its second aspect, that is the contraction of demand. So in this, just opposite condition will be there of the extension. So dear students, see over here, other things being equal, when quantity demanded decreases due to rise in own price of the commodity, it is known as contraction. जब किसी commodity की price increase होती है, shoot up होती है, उसकी वजह से जो उसकी demand decrease होती है, that is known as contraction of demand. See the schedule over here. Initially the price was 1, so demand was 5 in the economy, and as soon as the price increases to 5, the demand decreases to 1. So as soon as price increases, its quantity demanded decreases. Let us see in the diagrammatic presentation. Initially when the price was 1, the demand was 5 indicated by point B. Now price increases to 5, the demand decreases to 1 indicated by A. तो इनिशियली हम कौन से पॉइंट पे थे बेटा, बी पॉइंट पे थे. अब कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, ए पॉइंट पे. सो यू वी विल सी दैट देयर इज अ अपवर्ड, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं. एंड दैट इज वाई द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व. क्या बोलते हैं इसको बेटा, अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं. Now we are coming to the next part of the topic, that is the change in demand, and what is a synonym or the other name of change in demand, that is shift in demand curve. So dear students, what is the change in demand? Change in demand refers to change in quantity demanded of a commodity in response to change in other determinants of the demand. If the demand of a particular commodity changes due to change in other factors, even when the price remain constant, that situation is known as change in demand. क्या बोलते हैं बेटा इसको, change in demand बोलते हैं. As the movement same in the shift as well, here are also two aspects, increase in demand and the decrease in demand. Let us discuss them one by one. The very first, that is increase in demand. So what is increase in demand?
when more of a commodity is purchased at the same price, it is नोन एज इंक्रीज इन डिमांड. जब कमोडिटी की प्राइस सेम रहने पर भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है, दैट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, and it is due to change in other factor. And why does it happen? It doesn't happen due to price, but dear students, it happens due to the other factors, that means other than price. We all have read about the demand function. तो demand function की पहली इक्वेशन छोड़ दें, px, इसके अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से there can be the increase in demand. The same we can see in the form of schedule as well. You will see the price remain constant. Initially it was 10 and later on it was also 10, but the quantity demanded, the demand, initially it was 20 units and now it increases to 30 units even when prices are same. So in the same way, if we talk about the diagrammatic presentation, तो diagram में show करेंगे बेटा, when price was 10, demand was 20. So that demand curve is indicated by sky blue line, sky blue color, that is named as D1. उसको हमने क्या नेम दिया बेटा? D1 दिया. नाउ द प्राइस रिमेन सेम, प्राइस सेम रही लेकिन डिमांड पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई 30 एंड दैट डिमांड कर्व इज नेम्ड एज D2 एंड इंडिकेटेड बाय ग्रीन कलर. सो व्हाट वी कैन सी, ए से हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? डायरेक्शन देखेंगे बेटा, इट इज़ द राइट वर्ड. सो वी कैन से इट इज इंडिकेटेड एज राइट वर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ठीक है, जब भी हम लोग इंक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे तो हमारे माइंड में एक इमेज आनी चाहिए एंड दैट इज अबाउट द राइट वर्ड और द फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. नाउ व्हाट आर द कॉजेज? ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कांस्टेंट रहने के बाद भी डिमांड इंक्रीज हो रही है? सो डियर स्टूडेंट, देयर आर सम सर्टेन फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन डिमांड इवन व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, एंड दीज फैक्टर्स आर, जस्ट सी ओवर हियर, द वेरी फर्स्ट, दैट इज when income of the consumer increases. As soon as consumer income will increase, the demand for the commodity will also increase. Second, when price of substitute good increase. As soon as the price of the coffee will increase, people will start more and more amount of tea. ठीक है, तो जैसे ही सब्सिट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज होंगे तो जो कमोडिटी है उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी. When price of complementary good fall, for example, if the price of the petrol decreases, obviously the demand for the scooter, for the car, for the bike will increases. So whenever the complementary goods price will decrease, it will result in the increase in demand at the existing price. कार की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन पेट्रोल के प्राइस बहुत कम हो गए, इसकी वजह से कार की डिमांड क्या हो गई बेटा? शूट अप हुई, इंक्रीज हुई. नेक्स्ट, when taste and preferences of consumer shift in the favor of commodity. जब किसी commodity के फेवर में टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं, तो इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस जो डिमांड है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. एंड द लास्ट वन, when availability of commodity is expected to reduce in the near future. अगर हमको ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में ये कमोडिटी हमको ईजिली अवेलेबल नहीं होगी, सो वॉट वी यूज टू डू? Obviously we used to purchase more and more commodity even at the existing prices. So all these are the responsible factor for the causes of increase in demand. Dear students, now come the second term, that is decrease in demand. So what decrease in demand? When less of a commodity is purchased at the same price, it is known as decrease in demand. जब सेम प्राइस पे किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होती है उसको हम लोग डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं. एंड इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर. ये भी किसकी वजह से होती है बेटा? ड्यू टू अदर फैक्टर्स. द सेम वी कैन सी इन द शेड्यूल. The price remain same 10 but the demand decreases from 30 to 20. Initially demand 30 थी, अब वो decrease होकर कितनी हो गई बेटा? 20 हो गई. The same we can see in the form of diagram as well. Initially it was indicated by D1 curve from the sky blue color. Now the next one, that is the green डिमांड कर्व, दैट इज नेम्ड एज D2. हम ए से बी पॉइंट की तरफ गए, दैट इज द बैकवर्ड, दैट इज द लेफ्टवर्ड. सो वी कैन से दैट डिक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड एज और बाय बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. यहाँ पे क्या होता है? शिफ्ट होता है. कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड? अब डिक्रीज इन डिमांड के कौन कौन से कॉजेज हैं? सी, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज. जैसे ही कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज होगी. सेकंड, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेज. एज सुन एज द प्राइसेस ऑफ द कॉफ़ी विल डिक्रीज,
So many of the consumer who were consuming tea, they will left out the tea and they will start consuming the coffee. So as soon as the prices of the coffee will decrease, the demand of the tea will also decreases, because many of the consumer now will be able to consume coffee. Third, when price of the complementary good increases, as soon as the prices of the petrol shoot up, the demand for the car, for the bike, for the scooty, even at the existing price remains low. क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट, when taste and preferences of the consumer shift against the commodity, जब आपके जो टेस्ट है, जो आपका प्रेफरेंस है, वो किसी कमोडिटी के अगेंस्ट में चला जाए, जो कमोडिटी आपको पसंद ना हो अब, सो ओबियसली जो कमोडिटी आपको, आप जिसको डिसलाइक करोगे जिस कमोडिटी को, ओबियसली आप उसका जो कंजम्पशन है उसे क्या कर दोगे बेटा? रिड्यूस कर दोगे, इवन एट द सेम प्राइस. एंड द लास्ट वन, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको नियर फ्यूचर में इस कमोडिटी की बहुत अवेलेबिलिटी मिलेगी, तो एट द एग्जिस्टिंग प्राइस आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे. whenever you will get the commodity easily in the market, जब भी आपको मार्केट में वो commodity easily अवेलेबल है, तो जब आपका मन करेगा तब आप डायरेक्टली परचेज कर लोगे. यू विल नॉट स्टॉक अप द कैप गुड. आप किसी कमोडिटी को स्टॉक अप नहीं करोगे तो क्या होगा बेटा? एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी उसके जो डिमांड है वो क्या होंगे? रिड्यूस होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. नाउ द last topic of this lecture, that is difference between movement and shift in demand curve. So what is the difference? Just see the very first basis of difference, that is the meaning. I think we are clear with the meaning of movement along demand curve and shift and demand curve. So we are coming to the second one, constant factor. If we talk about the movement along demand curve, so in this condition other factors remain constant. कौन से क्या कांस्टेंट रहता है बेटा? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट द शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन दिस कंडीशन प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट. प्राइस में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होते. थर्ड बेसिस, दैट इज द एस्पेक्ट्स. अगर हम लोग मूवमेंट के एस्पेक्ट्स की बात करें तो इट इज़ द एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ shift in demand curve, that it is increase and decrease in demand. And the last, that is the basis presentation. मूवमेंट में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, हम लोगों ने देखा था. एंड इन द शिफ्ट देयर इज द फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे बेटा. आज हम लोगों ने देखा, दैट इज अबाउट द meaning of change in quantity demanded, that is also known as movement along demand curve. It is having two aspects, extension and contraction, which occurs due to change in own price of the commodity. Thereafter we have discussed about the change in demand, that is also known as shift in demand. इसके भी two aspects हैं, increase in demand, decrease in demand, and which occurs due to change in other factors. And last but not the least, we have discussed about the difference between movement and shift in demand curve. In the same way आपकी बुक में बेटा extension और increase का difference given है, contraction and decrease का difference given है. That is you have to see by yourself. If any problem is there, then you can ask. ठीक है. God bless you all. Thank you very much.